One drop of the mixture of colored compound was placed on the paper and some solvent was poured into A. So one drop mixture जो है color compound, it was placed on the paper and some solvent was poured into A. Draw on the diagram a spot to show where the drop of the mixture color compound should be placed on the paper at the start of the experiment. तो हमें जो है वो start of the experiment हमें डॉट जो है वो कहाँ पे शो करना चाहिए, क्या आपका आइडिया इस बारे में, कहाँ पे जो है शो करना चाहिए? तो कहीं भी वैसे हम कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ना यहाँ पे बेस लाइन की तरह लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ना तकरीबन जहाँ पे हम डॉट शो कर देते हैं, अलाइन टू शो द लेवल ऑफ द सॉल्वेंट इन ए एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो सॉल्वेंट का जो लेवल है वो हम शो कर देंगे। अबाउट हेयर इसका लेवल ऑफ सॉल्वेंट, लेवल ऑफ Name an item of apparatus that should be used to place a drop of the mixture of colored compound onto the paper. ये आपके पास आ गया। ड्रॉपिंग पिपेट, ठीक है, उसको हम यूज करेंगे। State when the paper should be removed from the solvent in A. पेपर को कब हमने जो है वो रिमूव करना है? जी, when the solvent is near the top of the paper. Name this method of separation of colored compounds. Chromatography. So these are about total 6 marks का था ये, and very easy. ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपका ये मार्क्स गेनिंग होते हैं। Next, question number 2. A student investigated the temperature change when two different aqueous solution of sodium hydroxide, solution G and solution H, react with dilute hydrochloric acid. Two experiments were done. A burette was rinsed with distilled water and then with dilute hydrochloric acid. The burette was filled with dilute hydrochloric acid. The hydrochloric acid was then run out through the tap until the level was on the 0.00 centimeter cube mark. A 50 centimeter cube measuring cylinder was used to pour 20 centimeter cube of solution G into a beaker. ठीक है, तो सबसे पहले हमने ब्यूरेट को रिंस कर लिया डिस्टिल्ड वाटर से, उसके बाद से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ब्यूरेट को हमने फिल किया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, एंड देन उसको हमने राउंड डाउन किया 0.00 सेंटीमीटर मार्क तक। ओके, नाउ टेक अ measuring cylinder of 50 centimeter cube used to pour 20 centimeter cube of solution G into beaker. तो आपने beaker ले लिया,
ठीक है, we have to pour 20 centimeter cube of G, solution G. A thermometer was used to measure the initial temperature of solution G. 5 centimeter cube of dilute hydrochloric acid was added from the burette into the beaker. So अब हमने उसमें ऐड किया HCl from burette 5 centimeter cube. The mixture in the beaker was stirred using the thermometer and the temperature of the mixture was measured. Another 5 centimeter cube of dilute hydrochloric acid was added from the burette into the beaker. The mixture in the beaker was stirred using the thermometer and the temperature of the mixture was measured. Okay. 5 centimeter cube portion of dilute hydrochloric acid continue to be added and the temperature measured until a total of 35 centimeter cube of dilute hydrochloric acid has been added. So हमने 5 centimeter cube के portions कर लेने और उसको हमने ऐड करते रहना है एंड टेम्परेचर जो है वो ईच टाइम जो है हम उसको नोट डाउन करेंगे. Experiment number 2. Experiment 1 was repeated using solution H instead of solution G. So same experiment was repeated with solution H. Use the thermometer diagram to complete the table. Experiment 1 using solution G. So the temperature is thermometer diagram. Temperature कितना है इसका? 21. Twenty-four, 26, 24, 26.5, which is 26.5. You can write 0.0 here. Okay. It is 28, then 29, then again 28.5, then again it is 28, and then it is 27.5. It is experiment 1 के हो गए. Now write down experiment number 2 using solution H. 22, 25, 27.5, then it is 28, then again it is 27.5, (27), 26.5, then it is 26. Okay. Next आ जाता है temperature changes. दोनों में temperature changes since start. ठीक है. So it was the zero volume of dilute hydrochloric acid. हमने ऐड नहीं किया था. ठीक है. So temperature was 21 degrees centigrade. Temperature change since start. इसका temperature देखते हैं.
का टेम्परेचर चेंज आ जाएगा। ये जो ब्लू में है इनमें हम नहीं मेंशन करेंगे यहाँ पे। 21 to 24 it is 3.0, then it is 26.5 है। तो ये अच्छा, इसको आपने इस तरह से करना है कि मैं आपको बताती हूँ। 21 to 24 आपने 21 जीरो वॉल्यूम थी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ठीक है। तो इसको आप स्टैंडर्ड रखते हैं। अब आपको 24 माइनस 21 3, 26.5 माइनस 21 ये आ जाएगा आपके पास 5.5, and 28 minus 21 7.0, 29 minus 21.5 तो ये आ जाएगा आपके पास 8.5, ठीक है। इसी तरह से आपने सारी मेंशन कर ली। 28.5, 21 माइनस करेंगे 27.5, सॉरी 7.5, 7.5, 7, 28 minus 21, 27.5 minus 21 तो ये आपके पास आ जाएगा 6.5, ठीक है। गॉट इट। इन सब रीडिंग्स में से आपने 21 को माइनस कर देना। नाउ फॉर दैट इसमें से अब आपने 22 को माइनस कर देना। 25 it is 3, then 5.5, then it is 6.0, then again it is 5.5, then it is 5.0, then it is 4.5, then it is 4.0, ठीक है। अब आपने इन सब रीडिंग से आपने 22 को माइनस कर दिया। गॉट इट। Draw a graph. Complete a suitable scale on the y-axis and plot the result from experiment 1 and 2 on the grid. Draw two smooth line graphs. Both curves must start at 0. Clearly label your lines. ठीक है। So temperature is on y-axis and volume of dilute hydrochloric acid is x on x-axis, ठीक है। So जो है हमने सोल्यूशन G एंड सोल्यूशन H दोनों के लिए हमने जो ग्राफ है वो लेना, ठीक है। तो हम इसमें तकरीबन ले लेंगे स्केल हम ले लेंगे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो टेम्परेचर हमारे पास मैक्सिमम आया है 27 नहीं सॉरी 29, ठीक है। तो मैक्सिमम हमें 29 रीच हो रहा है। तो एंड जो टेम्परेचर चेंज है, ठीक है, इट इज सोल्ड
टेक टेम्परेचर चेंज में हमें मैक्सिमम रीच हो रहा है हमारे पास 8.5, ठीक है, this 8.5, so we take up to 9 और 10 हम ले लेंगे, ठीक है, so let's take 0, 8, and this is 10. So now make the graph. Okay, for each reading, start with the 0, 0 से start कर देते हैं, 0 पे थी हमारे पास, 0 पे हमारे पास नहीं था, 5 start with the 5, टेम्परेचर चेंज देख रहे हैं, so it is 3.0, दोनों दोनों लाइन्स 3.0, 3, somewhat here, 5, this is 3. Okay, then 10 पर हमारे पास रीडिंग it is 5.5 for both. This is 5 and 5.5. Here, somewhat here. Okay, for both graphs. Next we have for 15, 7 and 6. 7th for solution H, for experiment 7th for solution G, and 6 for solution H. And 15, तो हम दोनों पे लगा देंगे और उसके बाद हम अपनी लाइंस को जो है जहाँ पे डिफरेंस आ रहा होगा उसको हम शो करके तो जी और एच कर देंगे, ठीक है, या डिफरेंट कलर यूज कर लेंगे. सो इट इज 1 2 3 4 5, it is here 7 and 6 is for here 15 and 7 is for second graph. 7 is for first graph and 6 is for second graph. Okay, अब 20 पे 8.5 and for second graph it is 5.5.
8.5 is somewhat here. This is on 20. And 5.5. 5 and ठीक है. So second. अच्छा, नेक्स्ट आपका 7.5 एंड 5.0. 7.5 for 25. 7.5 for 25. And 7.5 and 5.0. For 25. For 30 it is 7 and 4.5. And then it is 4.5. Here it is. Okay. Next is 6.5 and 4.0. Somewhat. How many lines? For first graph, this is for solution G. Now I इसके बिल्कुल साथ लगाते हैं. यहाँ से ये आके सेपरेट हो जाएगी. So, जब आप लगाएंगी लाइन, आपके पास तो एक पेंसिल होगी. So you have to mention solution G, add solution H. G and H. From your graph, deduce the temperature change obtained when a total volume of 13 centimeter cube of dilute hydrochloric acid is added in experiment 1. So 13 देखें कहाँ पे आता है. 10 and 15. 2 हम ले रहे हैं. ठीक. 11
12, 13. Here is 13. 13. This is 13. So इसको थोड़ा सा कर लेते हैं. 11, 12. This 13 and टेम्परेचर चेंज जहाँ पर ये तकरीबन इसको टच कर रहा होगा. ठीक है. सो here it is about that point. This it is about 6.6 Kelvin. 6.6. Show clearly on the grid how you work out your answer. Temperature change is 6.6 degrees centigrade. Explain why the temperature change decreases towards the end of each experiment. इसमें हम 2 रीजंस जो हैं वो बता सकते हैं. वन इज due to the excess of HC एंड पे हम 5 सेंटीमीटर क्यूब का पोर्शन जो है वो हम ऐड करी जा रहे थे until it reaches to the 35 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. तो एक्सेस हो गया ना उसका ड्यू टू the excess of hydrochloric acid added. ठीक है. और reaction stopped as all NaOH is used up. ये 2 रीजंस हो सकती हैं. इससे आपको ये राइट डाउन करनी. Explain what conclusion about the concentration of solution G and solution H can be made from the results of experiment 1 and 2. So from experiment we concluded that solution G is more concentrated than solution H because जो टेम्परेचर चेंज है वो हायर है इन एक्सपेरिमेंट 1 एज कम्पेयर टू दी experiment 2. So experiment 1 needs more hydrochloric acid. Okay. So write it down.
we concluded that solution G is more concentrated than solution H, as temperature is higher in experiment 1 as compared to experiment 2. The higher temperature needs more hydrochloric acid. Got it? Explain how the result obtained would be different if a polystyrene cup is used instead of the beaker. So instead of beaker, we can use polystyrene cup.